Okay, good afternoon all. Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, first of all, in the last lecture, we have seen discussed that conflict serializability and the second one is the view serializability. Can anyone revise that thing? Conflict serializability. What are the four conditions of that conflict serializability? Unmute your mic and tell me. Hello, sir. Good Yes. afternoon. Good afternoon, Mercy. Sir, in conflict serializability, there are three cases. That first one is that it should be different transaction. There should be from different transaction and work on same data item. And the fourth one is there should be one write operation in that case, and read is not conflicting, and read write read and write are conflicting. Thank you. Okay. Any other students? Sir, if a given schedule can be converted into a serial schedule by swapping its non-conflicting operation, then it could be called as conflict serializability. Okay. What are the four conditions? Sir, the conditions, given conditions should be four. If we are working on a same data set, for example T, then Okay. both conditions should not conflict in case both the data are being read by two Yes. different users T1 and T2. In any other cases, there would be a conflict, for example, read and write and read, or write and write. Hmm. What about view serializability? Sir, View serializability. view serializability, sir. Sir, if Yes. two schedules with the same set of transactions are given, then the schedules are said to be in view serialized if three conditions are satisfied. First, initial read, second, updated read, and Okay. third one is final write, sir. Okay. Good. Okay. Very good. Next. Okay. So by concluding this thing, conflict serializability, one operation must, if one operation is right on a same data item, then definitely it will be conflicting. And for the view serializability, initial read, updated read, and the third one is the final write operation. These three conditions so that. Okay, let's move forward. Just wait a minute so I can save that scene. Okay, now transactions two-phase commit protocol. This one is the also simplest theory and very most IMP theory in which we need to identify one coordinator and one at the participation. So let's start two-phase commit protocol. So name suggests its meaning. It has a two phase. And third, commit word. It means we are talking. We will talk about the commit step. So in a two-phase commit protocols, it ensures that all the participating nodes perform the same task of transaction. It means all the participation of the transaction should perform all the tasks. It is required to make sure either all the databases are updated or none of them are updated so as to maintain the database synchronization, or we can say that database consistency. To maintain the database consistency, it must be either perform 100% or none of that. That is the part of acid property. So in a two-phase commit protocol, there is one node which act as a coordinator. We can say that monitor or a coordinator, or we can say that controlling node, and all other participating nodes are known as the cohorts or participant or slave. Again, in this theory, two-phase commit protocol, there is one node which act as a
coordinator, monitor, or we can say that controlling node who will control all these things, and all other participating nodes are known as the cohorts or participant or slave. So let me give you an analogy or a real example. For example, I am the one who is coordinating your lecture, lab session, and CC and the class or whatever, and you all are act as a participant, cohorts, and we can say that slaves. Now it involves two phase. Name suggests its meaning, two phase commit protocol. So it involves two phase. First one is the prepare phase. It means preparing to commit transaction. And the second one is the commit or abort phase, that is the final response. In this two phase, it acts as a two phase commit protocol. In the first phase, it prepares for the commit transaction, and second, final response from the participant. Let's see how it will work. So consider middle part, that is who is raising the finger. It is known as the coordinator, and the four person are the participant or cohorts or slaves. Here, now another side, it's a rising hand, that is known as the coordinator, and other side it is known as the participants. For understanding, we took only one participant there. Here you can see the cursor here, and here it gives the instruction. So we will give we will understand by parallelly. So he is the coordinator, and you all are participants. Let's see one by one two phase. First, coordinator will request to prepare. So coordinator will ask to participate, all the participate to request a prepare whether you are ready to commit or not. Have you done your task or not? So when coordinator will request to prepare to participate, but obvious in this diagram you can see coordinator will ask to like this. Coordinator send requesting asking for ready to commit. So first, in a first request to all participants whether you are ready for commit or not, then someone will respond like this. And participant response to coordinator, now we are ready or we are prepared for committing. Now let's see in this diagram. See, all participants gave the response to coordinator, we are ready. So participant send reply whether ready to commit or not. So maybe there is two possibility. Either all participants are ready, or maybe few participants are ready to commit and few are doing their work. So we will discuss that thing in the later. Third thing, if coordinator receive all the prepared response from all participants, then coordinator will send the commit or abort request to participate again like this. Coordinator informed to do commit. So coordinator will give the instruction to all participate. Now you can commit or abort. We will discuss each and everything in a detail. First see the cycle. Now participant will commit or abort the transaction and then give the acknowledgement to the coordinator whether he has done or not. So done. So participant send the acknowledgement to inform whether commit done or not, whether he saved or not. Clear? So this phase is known as the prepare phase. In the first phase, it will request to prepare, and participant will give the response for that prepare request. In the second phase, it's a commit phase. So this is the two phase. First phase is the prepare phase, and second one is the commit phase. In the commit phase, coordinator will send the commit request to all participants, and all participants will acknowledge for the commit response in the commit phase. Prepare phase में
प्रिपेयर के लिए रिक्वेस्ट करेगा और उसका रिस्पॉन्स देगा। कमिट फेज में कमिट का रिक्वेस्ट और कमिट के रिस्पॉन्स, दिस टू फेज आर नोन एज द टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। Now let's see what happened if you are doing their work and you are committed. Let's see one by one. Now prepare phase. Once each slave, each participant completes its execution, it sends a done message to the coordinator. First, coordinator will send the prepare request to all the participants, and after that, each participant completes the transaction and sends the done message to the coordinator. When the coordinator receives done message from all the participants, all the slaves, it sends a prepare to commit message to the slave. It means when the coordinator receives all the response from the participant. For example, I am the coordinator and you all are right now 50 students are attending my sessions. So first step, I request, I will send the request to all students to prepare for commit or not. So that is first step. In a second step, you all will respond me, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, like this. If I receive all the response, it means right now 50 students are there, and if I receive all 50 responses, then and then I will send a next message. Now do commit. Now do commit. If participants want to commit, it sends a ready message, and if a participant or slave do not want to commit, it sends a not ready message to the coordinator. So आप में से कोई लोग रेडी होंगे, आप कुछ स्टूडेंट्स रेडी नहीं होंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल इन्फॉर्म मी. बट नेक्स्ट इज इन अ कमिट फेज. कमिट फेज में कब जाएगा? व्हेन द कोऑर्डिनेटर रिसीव्स रेडी मैसेज फ्रॉम ऑल दी स्लेव्स, it sends a global commit message to all these slaves. It means if I receive 50 response, 50 ready message from students, all students, then and then I can go forward and I can send a commit message to all. If one or two students are not ready, then I cannot send a global commit message. I will send a abroad message. Second point, the slaves commit the transaction and send commit acknowledgement message back to the coordinator. It means acknowledgement आप लोग देंगे. Once coordinator receives commit acknowledgement message from all the slaves, then the transaction is considered to be committed or completed. It means these four steps, or we can say that these two phases are completed successfully. That's it. Now, in a commit phase, when the coordinator receives a not ready message from all these slaves, it means 50. I am not getting 50 response. I am getting only 25 response, and 25 students are not ready. It means I will not send the commit statement. I will send a global abroad message to all the participants. It means we will restart, or we stop this current transaction. So slave abroad the transaction and sends a abroad acknowledgement to the coordinator. So वो save नहीं होगा. So once a coordinator receives the abroad acknowledgement message from all the slaves, the transaction is considered to be aborted or error. So error, it means failed. Failed, it means we have to restart that transaction again. Clear? Okay. Now let's go to the same diagram so you can understand. Let's discuss with you. I am the coordinator and you all are the participants. In a laboratory session or in every theory session, coordinator, it means I am asking a question. Are you getting? If you are having any doubt, it means preparing. I am sending the request to prepare. Then you are sending the acknowledgement. Yes sir, no doubt. Yes sir, no doubt. Yes sir, no doubt. It means you all are ready. This one is the prepare phase.
Now second, if I receive all the answer in yes, it means किसी को कुछ doubt नहीं है, then I will go forward, it means then I will explain the next theory. But उसमें से किसी 2-3 स्टूडेंट्स को डाउट है, they will send me, sir I am not getting, then what I have to do, I have to stop all the transaction. It means I will say just wait a minute, let me explain again. So I will I am explaining that thing again, and when I receive all the yes answer, at that time I am saying commit, okay let's move forward, that is your commit. So फिर मैं आपको बोल दूंगा ठीक है आप अभी commit कर दो, it means next step commit, और commit हो गया तो आप बोलेंगे yes sir got it. अगर commit नहीं हुआ, एक दो का आंसर्स नहीं आ रहा तो एब्रोट हो जाएगा, नहीं आगे जा पाएंगे, ठीक है. Now is there any query? This one is the simplest two-phase commit protocol, prepare phase and commit phase. Is there any students who is having a doubt? Okay, I am getting no. Right now 48 students, but I am getting only some responses. And Ravindra said repeat. Ravindra says repeat. It means I cannot send you a commit protocol. It means abroad. सबके रिस्पॉन्स आए तो ही आगे जा सकता हूँ, वरना नहीं जा सकता हूँ इस थियरी के लिए, ठीक है. एब्रोड, अभिषेक सिंह इज सेइंग एब्रोड पर्सन, रविंद्र को एब्रोड कर दो. इस थियरी के लिए नहीं कर सकता, अदरवाइज आई कैन डू इट. यहाँ पे आप देखिए इन अ प्रिपेयर फेज, फर्स्ट कोऑर्डिनेटर विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर फॉर द कमिट. मैं आपको कमिट के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा. आर यू रेडी? फिर आप मुझे एक्नॉलेज करेंगे, यस सर वी आर रेडी. तो सबने डाउट में पूछा, वी डोंट हैव एनी डाउट. रविंद्र आपने पूछा डाउट है, तो अभी प्रिपेयर फेज में नेक्स्ट क्या है, कमिट और एब्रोड. तो कमिट तो नहीं हो सकता, तो अब एब्रोड हो गया, तो बाकी सब एब्रोड में चले गए. फिर से मैं पूछूंगा नाउ इज देयर एनी डाउट, अब सब बोलेंगे नो. देन आई विल से okay let's move forward. It means that theory is finished, it means commit हो गया. फिर आप बोलेंगे yes sir go ahead, move forward for the next theory, that is the commit phase. It is the very simplest theory. Clear? Ravindra, you need to report on a time, otherwise next time I will not explain. Okay, later on right now someone is joining, then I will explain that theory again, then what will happen with you? You will be bored. जिन लोगों ने ये थियरी 2 बार पढ़ ली वो बोर्ड हो जाएगा. एक स्टूडेंट्स के लिए मैं सब रिपीट नहीं कर सकता हूँ. एंड माइंड योर लैंग्वेज रविंद्र, you are in a group and a recording. Okay, now let's say as you have committed this theory, let's move forward database recovery. So there are many scenarios where a transaction could not reach commit or abroad state. Let's see one by one. First, disk failure. If disk is failed, then we cannot complete the transactions. And database management system crash. जो सिस्टम में हम कर रहे हैं वो क्रेश हो जा रही है, ओएस फेल हो जा रही है, पावर फेलियर हो जा रहा है, फ्लड आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है. दिस ऑल लीड्स टू द failure. It means this may lead to data inconsistency or data loss. So whenever this type of situation we will find, at that time we need to recover that database. जो टेबल फेल हो गया, जो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, that transaction we need to recover. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन आप में से हो चुका है, अगर आप रिकवर नहीं करेंगे तो आपसे मनी कट गया, सामने वाले में ज्वाइन नहीं होगा तो सामने वाला दूसरी बार पूछेगा हमारा मनी नहीं आया. सो दैट्स इट. सो फॉर एग्जांपल database management system crashes after 20 out of 25 operations were executed successfully. It means
We have a total 25 transactions. Out of that, 20 transaction operations are performed. After 20 operations, it lead any disk failures, this database crashes, then this may lead to inconsistent database state. So that's why we need to keep ACID properties in a priority here. Either perform 100 or 0. If it is performed 20% or 50%, then it leads to the database inconsistency, and database must be in a consistent state. So the whenever database goes into inconsistent state, it is required to recover the database. So database recovery is the process of restoring a database and its data to the consistent state. So we can simply say that recovery of that process, recovery of that transaction. Clear? So that is the database recovery. So it helps to recover the data up to the state of crash or failure. Now point is that if out of 20 operations we reached up to the 20 and then system failed, then what will happen? We have two options. Either we can start from the 19th one or 20 कंप्लीट हो गया तो 20 से स्टार्ट करेंगे या फिर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. वी हैव टू ऑप्शंस. या फिर इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप और इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 20 स्टेप. सो इट अप टू द डेटाबेस फेलियर. कहाँ से फेल हुआ है, कहाँ से हम रिकवर कर सकते हो. जैसे आप गेम खेल रहे हो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल या पबजी है या फिर काउंटर स्ट्राइक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि व्हेन यू रीच एट सर्टेन लेवल और सर्टेन स्टेप, फॉर एग्जाम्पल लेवल 10 से आगे चले गए, 11 तक पहुंचे नहीं हो और सडनली स्विच ऑफ हो रहा है फोन, देन व्हेन यू स्टार्ट योर फोन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11 और इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10.5. जहां से स्टॉप हुआ वहां से स्टार्ट होगा या फिर 10 से स्टार्ट होगा. कहां से होगा स्टार्ट? Am I audible? Yes. यस 10 से स्टार्ट होगा. लेकिन कहां तक हम पहुंचे थे? 10.5 तक. तो वो 0.5 वो रिकवर नहीं होगा. सो 10 इज व्हाट इट इज नोन एज द चेक पॉइंट्स. रिमेंबर ऑल ऑफ यू, this example is gave for the next to next theory. I gave this example. It means you understood this theory very well. Clear? Again I am repeating. If I am playing any game and reach up to the level 10 and moving forward up to the 10.5 and system is crashed due to any failure, either disaster, electricity, flood, whatever, network issue, whatever, and next level is 11. तो जब मैं रिस्टार्ट करूंगा फोन, तब आपकी गेम रिस्टार्ट जब स्टार्ट करेंगे तब आपकी गेम कहां से स्टार्ट होगी? 10 से. क्यों 10 से? पहले से क्यों नहीं हो रही है? Can anyone unmute your mic and can give the response of this? Why it is not start from first? Why it is start from 10? Yes, Aryan Singh says checkpoints. Yes, same word we will use in a database, checkpoints. So we need to set that checkpoints. Let's see in a theory. So we have a recovery. It's based on the log. जैसे हम हिस्ट्री होती है ब्राउजर्स में, सेम लाइक दैट log based recovery. Whenever you log in with the Sonic Vault CyberROM security, at that time your log file will generate it. Log file it means your history. So in a database, whenever you create the database, it will generate the log files. So what is that thing? Let's see. So log is a sequence of records which maintain information about all the activities done by each operation on the database. So log is a sequence of records
which maintain information about all the activities done by each operation on the database. So in a short form, as you are familiar, we can say that history. So in a log-based file, a log is kept on a stable storage. It means on a hard disk. It will store the log file, and it contains this many information like start of the transaction, when it started, then transaction ID, then record ID, then types of operations, insert, update, delete, or old values, new values, status of the transaction that is committed or aborted. This much information it will store on a log file. Start of transaction, transaction ID, record ID, type of operations, old value, new value, status of the transaction, whether it is committed or approved. For example, when transaction T1 starts, it records T1 start in the log file. So it will execute trigger this thing. T1 start, it means T1 start hoga. When T1 is about to execute write operation, just before that, it records a new log as a T1, X, D1, D2. It means transaction T1A, X is the data item, D1 is the old value, and D2 is the new value. It means D1 is the value of X before transaction, and D2 is the new value to be updated for the X. Let's see one by one. If the transaction is completed, then it records T1 commits, and in case of failure, it records T1 aborts. So T1 starts the transaction आपका start होगा, उसके बाद certain operations हो गए, either read, write और T1 X, D1, D2, और last में क्या होगा? If transaction successfully completed, then T1 commit. अगर फेल हो रहा है, then T1 abort यहाँ पे हम लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लॉग बेस्ड रिकवरी में क्या प्रॉब्लम हुआ। T1 एब्रॉड हुआ तो चेक पॉइंट से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग बेस्ड रिकवरी, इमीडिएट एंड डिफर्ड log based recovery. First one is the immediate database modification. Okay, just wait a minute, let me inform you. This here is also very most timely as per the GTU exam point of view. Explain log based recovery. So in a 7 marks you need to explain this thing with immediate and deferred database modification. So name suggests its meaning immediate database modification. It means whenever we changes anything, it will reflect immediately to the database, not in a temporary variable, not in a temporary table. It will immediately reflect to the database. That is known as the immediate database modification. Okay, let's see. Changes to the database are executed immediately as they happen without waiting for the commit command. So जो भी changes आप कर रहे हो वो immediately database में reflect हो जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम immediate database modification. If the transaction is not committed, then the complete operation needs to be undone and the transaction is restart. नहीं हुआ तो transaction restart होगा. If the transaction is committed, then the changes made will be the permanent. Changes will be permanent. So let's see by example, transaction P1. Certain operations are given: read A minus 50, write A, read B plus 50, write B, and then last operation is commit. So T1 starts from the first, and value of A is 100 and B is 200. So read A is 100. Next operation, A is minus 50. It means now new value of A will be 50. So I check this point, red line. Immediate database modification, it means before starting this transaction, this operation will happen. T1 starts from the beginning, T1, A, 100, 50. It means, इसका मतलब क्या हुआ? T1 ट्रांजेक्शन में A डेटाबेस में old value क्या थी? 100. You can see my cursor. A is 100. Now after performing this, A is equals to A minus 50. Write A. A की new value क्या होगी? 50. So now A is 50, B is equals to 200.
Now after performing this, read b plus 50, write b. It means t1 comma b comma 200 comma 250. b की old value 200 थी, new value 50 ऐड होने के बाद it will be 250. So a is equals to 50 and b is equals to 250. Now right now in immediate database modification, commit statement is remaining. It means commit अभी तक हमने नहीं दिया. So before the commit is executed, all the updates are made in the database. अब तक क्या हो रहा था, commit होने के बाद ही database में reflect हो रहा था, commit होने के पहले वो सब कुछ temporary file में होता था. यहाँ पे before the commit is executed, all the updates are made in the database in an immediate database modification log based recovery. Clear? Now let's see deferred database modification. So it's what obvious opposite of immediate. Immediately नहीं होगा, कब होगा, commit करने के बाद. So let's see, changes to the database are executed only after the command is executed. जब तक commit नहीं होगा तब तक deferred database नहीं होगा. If the transaction is not committed, then the changes won't be reflected in database and only transaction is restarted. And if the transaction is committed, then the changes are reflected and will be permanent in the database. Let's see the example. Same example, same value, a is equals to 100, b is equals to 200. But here you can see the deferred, it means after committing. So first after committing, P1 starts, P1 a में से 50 value गई तो 100 minus 50, new value 50. So you can write into angular bracket. So that is the log based recovery. A is equals to 50, b is equals to 200, same b 250. A 50, b 250. यहाँ पे commit के बाद after the commit is executed, all the updates are reflected in the database. In short, what is the difference between immediate and deferred? In immediate, it will immediately reflected to the database, and deferred, it will reflected after the commit statement only. That's it, nothing else. So this is the log based recovery, deferred and immediate. Okay, just wait a minute, let me tell you. Okay, as you said, checkpoints. Is there any doubt? No one is saying nothing, it means no. Okay. Next is the checkpoints. Let's talk about the 10, 10.5 and 11. What is checkpoints? Checkpoint, it means one point that from that point we can recover the failure. We can roll back the transaction. It means वहां से हम transaction आगे जा सकते हैं. ऐसा नहीं कि अगर 10.5 से फेल हुआ तो फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा. If we have made the 10 as a checkpoint, 10 को हमने checkpoint बनाया है तो वहां से स्टार्ट होगा, अदरवाइज फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा. So let's see. It may be possible that log-based recovery consumes more time while recovering the data using logs. Thus, to reduce the time consumption, we can use the checkpoints. It means periodically we will make the checkpoints. Also, we can perform this thing practically also. And practical example of this is level by level we are making the checkpoints. Level 1, then it's checkpoints. Level 2 checkpoints. Level 10 checkpoints. 10.5 पे checkpoints नहीं बनाया तो वो फेल होगा तो 10 से ही स्टार्ट होगा, लास्ट चेकपॉइंट से स्टार्ट होगा. If you want to start from previous checkpoints, you can put it manually, but by default it will start from the last checkpoints. So checkpoints is a point which describes that any operation of any transactions that done before that point are executed correctly and stored safely in the database. It means level 10 पे checkpoint से है तो 1 to 9 level completely अपने कर दिए complete and वो सेव हो चुके हैं डेटाबेस में. That is the meaning of checkpoints. Let's see. This is the time. Time goes on left to right. Let's see. TC is the checkpoint time.
यहाँ पे हमने चेक पॉइंट बनाया, TC इज चेक पॉइंट टाइम एंड दिस वन इज TF. TF इज इट मीन्स फेलियर, यहाँ पे फेल हो रहा है. जस्ट वेट मिनट. ओके, यहाँ पे सिस्टम आपकी फेल हो रही है. So let's see, T1 transaction is is completed or it's committed before the checkpoint time. Now T2 transaction is cross the checkpoint. It means T2 transaction आधा हो चुका है और थोड़ा सा बाकी है. Then T3 is beyond the checkpoint time. It means we can say that TC is the 10, T3 is the 10.5 and TF is the 11. Next यहाँ पे चेक पॉइंट बनाने वाले थे लेकिन वहाँ पे फेल हो गया. सो 10.5 इट मीन्स ट्रांजेक्शन T3 फेल हो रहा है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? T2 का जितना चेक पॉइंट्स खत्म हो चुका है उतना हम कह सकते हैं. नाउ T4 फेल हो रहा है. ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन वर्किंग ऑफ द चेक पॉइंट इन केस ऑफ फेलियर. फर्स्ट, T1 will be ignored as it is committed before checkpoints. So यहाँ पे सपोज T4 फेल हो रहा है तो T3 भी फेल हो रहा है तो T2 कमिटेड है, चेक पॉइंट है यहाँ पे. TC इज द चेक पॉइंट. सो T2 के पहले जो भी हुआ है वो कमिटेड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो वी कैन इग्नोर इट क्योंकि ऑलरेडी इट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द डेटाबेस. सो वी विल नॉट डिस्कस दैट थिंग. T1. Next, T2 and T3 will restart again as they were active even after checkpoints but committed before the failure. It means in case of failure, it may be restarted. T2 and T3 because T2 is going on. Active था, पूरा complete commit नहीं हुआ था. Before committing, before next checkpoint, if it is failed then it may be restarted. So T2 यहाँ पे अगर TC के पहले खत्म हो जाता है तो कमिट हो चुका होता, लेकिन T2 यहाँ पे आधा हो गया है और आधा बाकी है. T3 completely कमिट नहीं हुआ है. T4 यहाँ से फेल हो रहा है. इट मीन्स T4, T3 एंड T2 इतना रोल बैक होगा. TC के बाद जो भी है वो रिकवर करना पड़ेगा. T2 आधा तो नहीं होगा, सो इसके लिए रिस्टार्ट पहले से करना पड़ेगा. Now next is T4 will be completely ignored as it was active even after the checkpoint and has not committed. So it means it doesn't matter. So T4 तो पूरा रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि वो checkpoint के बाद कर रहा है. If I am putting instead of TF, if I am putting TC, then what will happen? यहाँ पे TF की जगह में TC रख रहा हूँ, दूसरा checkpoint बना रहा हूँ, तो क्या होगा? Can anyone tell me? Unmute your mic. अगर यहाँ पे TF की जगह में दूसरा चेक पॉइंट बना रहा हूँ TC, then what will happen? अगर बाद में जाके कोई फेल होगा तो कितने ट्रांजेक्शन मुझे रिस्टार्ट करने पड़ेंगे T1, T2, T3, T4 में से? You can unmute your mic. Again I am repeating my question. यहाँ पे see my cursor, यहाँ पे एक चेक पॉइंट बनाया है, यहाँ पे दूसरा चेक पॉइंट बना रहे हैं TF में और आगे जाके फेल हो रहा है, तो कौन से ट्रांजेक्शन हमें रिस्टार्ट करने पड़ेंगे? T4 sir. Yes, because T4 is going on active. T3, T2 ऑलरेडी सेकंड चेक पॉइंट से पहले खत्म हो चुके हैं. Either we have a active or maybe later on. जैसे यहाँ पे T3, T4 and T2 एक्टिव है तो एक ही चेक पॉइंट है, तो उसके पहले का सब कुछ कमिटेड है, उसके बाद का अभी तक कमिट नहीं हुआ है, तो फेल हो रहा है, तो फिर से हमें रिकवर करने में T2 स्टार्ट करना पड़ेगा, T3 स्टार्ट करना पड़ेगा, T4 स्टार्ट करना पड़ेगा. सेम लाइक दैट इफ आई एम मेकिंग द चेक पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ फेलियर, देन व्हाट विल हैपन? T2 कमिट हो चुका, T3 कमिट हो चुका, लेकिन T4 एक्टिव है और वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. एसिड प्रॉपर्टी के हिसाब से एसिड इट मींस 100% और 0% है. यहाँ पे 50% हो चुका है, 50% बाकी है, तो फिर से हम T4 रिस्टार्ट करेंगे. T3 की कोई जरूरत नहीं रहेगी. दैट इज द यूज ऑफ चेक पॉइंट्स एंड ऑलरेडी वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट अननोइंगली. अब तक आपको पता नहीं था चेक पॉइंट्स डेटाबेस में कैसे काम आता है.
लेकिन आप डेटाबेस में आपने एक देख लिया कि गेम में काम आता है, डेटाबेस में भी यही सेम अप्लाई होता है। क्लियर? डेटाबेस में जब हम रोल बैक भी कर सकते हैं इसको। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? Only few students are giving me the response. I'm expecting more responses from remaining all students. Yes, Brajesh, good question. How does it helps in reducing the amount of time required during recovery? Okay, I get back to you just 1 minute. Let me see the other responses. No, okay. Brajesh, can you unmute your mic? यस सर। ओके रजेश, मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना। 10 से हम लेवल 10 से हम पार कर रहे हैं 10.5 पे। अगर 10.5 पे फेल हो रहा है, सिस्टम क्रैश हो रही है, तो ट्रांजैक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? सर वहीं से स्टार्ट होगा। वहीं से क्यों होगा? 10.5 से थोड़ी ना होगा। क्योंकि सर उसका जो टाइम है वो सर लिमिट नहीं है ना, क्योंकि सर कुछ भी इश्यू हो सकता है। नहीं, 10 से होगा, क्योंकि 10.5 पे कोई चेक पॉइंट नहीं बनाया, तो 10 से होगा। क्यों 10 से होगा? सर हम भी तो वही बोल रहे हैं सर। अच्छा, वहीं से होगा। अच्छा, मुझे नहीं सुना। वहीं से मतलब 10 से, 10.5 से नहीं, 10 से बोलते हैं। यस सर, यस सर। ओके, 10 से, दैट्स व्हाई आई कंफ्यूज। वहीं से मतलब 10 से। सो 10 से होगा। क्यों 10 से होगा? उसका आंसर बताओ ब्रजेश। सर Why? क्योंकि सर ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो चुका है चेक पॉइंट से पहले। चेक पॉइंट का जो Yes. टाइम है उससे पहले वो फेल हो गया। यस, चेक पॉइंट का टाइम नहीं, चेक पॉइंट के बाद फेल हुआ। 10 इज द चेक पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 10। चेक पॉइंट 10 पे बनाया। लेकिन सर चेक पॉइंट का जो सर एक्चुअल मीनिंग है वो आफ्टर और बिफोर दोनों से रिलेट किया हुआ है सर। आप एक पे ही अटके हो। चेक पॉइंट एक नहीं हो सकते, मल्टीपल हो सकते। यस सर। ठीक है, तो मैंने 10 पे एक बनाया और 11 पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन मीनवाइल 10.5 पे ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से। वहां तक आपको क्लियर है? वो 10 से क्यों होगा? क्योंकि आपने चेक पॉइंट वहां पे एक बनाया है और वो लेवल आपने पार कर चुका है। आर यू गेटिंग अप टू दिस? यस सर। ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, अगर मैं चेक पॉइंट 10 पे नहीं बना रहा हूँ, एक भी चेक पॉइंट्स नहीं बना रहा हूँ 10.5 तक, तो कहां से स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शन? अगर फेल हो गया तो फिर से वो ट्रांजैक्शन कहां से स्टार्ट होगा? 1 से ना। तो 10 से स्टार्ट होने में और 1 से स्टार्ट होने में टाइम ज्यादा किस में लगेगा? 1 से। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ चेक पॉइंट। तो आप में रिकवरी में टाइम कौन ज्यादा लगेगा? शुरू से करेंगे वहां से। आर यू गेटिंग ब्रजेस? यस सर, यस सर। Okay. Any other students? Your question was good, but you need to keep in mind we can use the multiple checkpoints. जैसे आप गेम में मल्टीपल checkpoints होते ही है। हर बार ऐसे ना थोड़ी होता है कि लेवल 10 के बाद वो फर्स्ट से ही स्टार्ट होता है। लेवल 10 के बाद आप 11 क्रॉस कर गए तो 11 पे दूसरा चेक पॉइंट हो जाता है, और 11.5 पे फेल हो रहा है तो वो 10 से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 11 से। क्लियर? यस बजरंग, डू यू वांट टू से समथिंग? सर अगर हम लोग जैसे गेम खेल रहे हैं 10 लेवल तक है, तो फिर हम लोग अगर हम लेवल 5 को ही चेक पॉइंट बना ले और हम लोग लेवल 10 पर जाके मतलब फेल हो जाते हैं, तो फिर अगर नेक्स्ट बार खेलेंगे तो फिर वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से ही होगा ना, क्योंकि लास्ट चेक पॉइंट कहाँ पे है आपका? 5 पे। यस, राजकुमार गेव योर आंसर 5। बट ऑब्वियसली चेक पॉइंट जितने चेक, इस पे देखो, जितने चेक पॉइंट्स ज्यादा बनेंगे उतना बेनिफिट हमें रहेगा रिकवरी में और टाइम में। अगर कम चेक पॉइंट्स बनाएंगे तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दे दूं। ठीक है, मैं आज जितनी थियरी पढ़ी हमने क्या पढ़ा? लॉग बेस्ड रिकवरी में इमीडिएट, डिफर्ड, फिर ये चेक पॉइंट्स। ठीक है, मैं आई आस्क द क्वेश्चन, इज देयर एनी डाउट आफ्टर एवरी थियरी? ठीक है, अगर मैं वो नहीं पूछता और लास्ट में पूछता, लास्ट की 5 मिनट्स में, इज देयर एनी डाउट, तो कोई बोलेगा सर मुझे शुरू से नहीं समझ में आया। कोई बोलेगा सर मुझे फर्स्ट थियरी के बाद समझ में नहीं आया। तो मेरी हालत क्या होगी? फिर से आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, पूरा 1 घंटा लग जाएगा।
उससे उसके बजाय मैंने क्या बनाया, चेक पॉइंट्स। एक थियरी खत्म हुई, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आर यू गेटिंग, इज देयर एनी डाउट, आपने बोला नो सर, इट मींस चेक पॉइंट सेव्ड हो गया, और we can go forward for the next theory. That is the best example, suitable example, and runtime example I gave you. Clear? Is there any Okay. doubt? Yes. Okay. Next is the pseudo paging. Let me see whether it is feasible or not. Yes, it's only 2 slides, so let's finish this thing. What is pseudo paging? Pseudo paging, it means in short you remember this thing, copy of that page. Backup. जैसे हम लैपटॉप में फॉर्मेट लगाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, बैकअप ले लेते हैं, दैट्स इट, दैट इज pseudo paging. आपको समझ में आ गया इतना, तो ये पूरी थियरी हो चुकी. Now this theory is complete. You can understand easily. Pseudo paging, it means pseudo, it means copy. Pseudo, it means copy. So pseudo paging is the another method of database recovery, and it is very useful in case of serial transaction. So same, जैसे हम लैपटॉप फॉर्मेट लगाने जा रहे हैं तो इट मींस फेल होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं हार्ड डिस्क में या फिर गूगल ड्राइव में. तो अगर फेल हो चुका, लैपटॉप में डी ड्राइव गलती से डिलीट हो गई, तो हम क्या करेंगे, बैकअप रिकवरी में से, डेटाबेस में से अगेन कॉपी कर लेंगे जहाँ पे ओल्ड डेटा रखा था, दैट्स इट. सो इट इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ सीरियल ट्रांजैक्शन. सो द डेटाबेस इज fragmented into a fixed size block referred as a pages, and each pages are stored in a page table. This concept will be used in a 4th semester operating system. The database is fragmented, or we can say that divided into a fixed size block referred as a page. And each pages are stored in a page table. I will give you example also. So pseudo paging maintains 2 page table. First one is the current page table, and second one is the pseudo page table. It means A and A dash दोनों की वैल्यू सेम ही होगी. A को हमने कॉपी कर दिया और A dash कर दिया. That is when the transaction starts, both the tables are identical, both same ही होंगे. During transaction only current page table changes, pseudo page table never changes. During transaction only current page table changes, pseudo page table never changes. All the operations are performed on the current page table. Okay, let me give you okay, let me give you the example so you can get the perfect idea of copy. You can see this thing, just yes, I am copy this thing in a this thing. Its name is A and its name is A dash. It means इसकी हमने कॉपी बना दी. Now this one is the current page table and this one is the pseudo page table. It means दोनों में सेम ही है. Whenever I am writing this thing, for example, I am writing ABCD whatever, and pseudo page is the here. Now if this page is deleted or due to any failure this page is deleted, for example, अभी मैं आप लोग सब देखना, ये मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करने वाला. This one is the live demonstration. If due to any problem this table is deleted, then what will happen? Current page में मैंने जो ABCD लिखी थी वो delete हो गई. Then how I can recover? Nowadays in the market there are lots of recovery software, we can recover all this thing, but recover नहीं होगा जितना न्यू पेज में था. उसके पहले का जो है वो तो यहाँ पे सेव है. So this is known as the pseudo pages. Clear? So you can see here all the operation performed on the current page table. When the database page is updated, new copy of the page is created. New copy create होगी. Current page table points to the new copy. Current page table new copy को point करेगा, and then updates are performed. Then finally updates होंगे. Let's see. This one is the current page table which contains 5 pages. This one is the copy.
करंट पेज टेबल जो है उसकी कॉपी की, उसको हम बोलेंगे शेडो पेज टेबल। नाउ पेज 1, पेज 2, 3, पेज 4, 5 ये न्यू पेजेस है। तो ये न्यू पेजेस किसको रिफर करेंगे? करंट पेजेस और शेडो पेजेस दोनों न्यू पेजेस को ही रिफर करेंगे। When the transaction start, both current page table and shadow page tables points to the same page in a new pages। दोनों यहाँ पे एक को ही रिफर करते हैं। Now let's see the different scenario। The current page table 5 pages, shadow page में बटरफ्लाई 5 ही होंगे। Now new pages, it means we are changing something। Page 1 old page 2 है, page 3 है, page 4 है, old page 5। It means we have changed page 2 and page 5। It means new page 2 and new page 5। तो शेडो पेज क्या करेंगे? ओल्ड को ही रिफर करेंगे, ओल्ड को ही पॉइंट करेंगे, और करंट पेज टेबल है वो न्यू को रिफर करेंगे। So new pages में when the transaction updates page 2 and page 5, then a new copy of the page 2 and 5 is created। a new pages, ये आप देखो ये दो नए पेजेस क्रिएट हुए हैं। When current page table points the new copy and shadow page table continues pointing old copy। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एरोस, पेज 2 न्यू पेज को रिफर कर रहा है, पेज 5 यहाँ पे रिफर कर रहा है। शेडो पेज ओरिजिनल जो ओल्ड पेजेस है वही को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये नए वाले डिलीट हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, तो हम यहाँ से फिर से कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द शेडो पेजिंग। शेडो पेजिंग इट मींस कार्बन कॉपी, जेरोक्स, और वी कैन से दैट डुप्लीकेट। नए में चेंजेस किए, नया वाला चला गया तो फिर से हम पुराने वाले से लेके चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? यस। हेलो सर कल प्रीवियस क्लास में सर आप बोले थे कि कैश कोडिंग और कैश कोडिंग लेस का सर वो कुछ वो उसके हाँ, लिए। वो इसके बाद में करवाऊंगा। ओके सर। ये आपको एक्चुअली में लिखे हैं। Do not post any irrelevant comment in your chat। These all are recorded, and if it is necessary, then we can take a disciplinary action against on you। Shadow part it means copy of that thing। Shadow part it means copy of that thing। For example, you can see that MEFGI practical.txt Armanali now see on my screen, it is there। Now I am copying this thing and pasting that thing। Now its name is MEFGI practical copy.txt। copy it means shadow। Clear? Shadow it means इसने हमने बैकअप ले लिया। Now I am opening this thing and I am writing editing something, enrollment number 53, name, meters and whatever। ठीक है, अभी ये हो गया। ठीक है, अगर ये सिस्टम क्रैश हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो चुका, देन व्हाट विल हैपन? हमारा पूरा डेटा चला गया। हाउ वी कैन रिकवर द डेटा? बट फ्रॉम दी शेडो कॉपी, या वी विल नॉट हैव द एनी अपडेटेड थिंग्स, क्योंकि ये जब हमने कॉपी किया था तब यहाँ पे मैंने रोल नंबर नहीं लिखा था, यहाँ पे नेम नहीं लिखा था। दैट थिंग वी कैन ऐड एडिशनली, बट पुराना जो डेटा था वो तो सेम ही रहा। सो फ्रॉम दैट वी कैन रिकवर, वहीं से हम रिकवर कर सकते हैं जहां तक हमने कमिट किया था, सेव किया था तब तक का। सो दिस इज नॉन एज दी शेडो कॉपी। क्लियर? That is the different thing, reseveral. From the recycle, that is the different thing. But we are talking about the shadow page, it means in terms of database table। Now, is there any query?
Uh, okay, then thank you all of you. See you in the next lecture.